Alright, so welcome back to Create Finders, and in the previous video हमने React and Node.js के ऊपर project create करना start किया था. Alright, so today we are also going to perform the same activity and we'll continue about the project. मैंने बस कुछ colors activities करी है in the app and I think everything rest is absolutely working fine. Let me do npm start to really start the project and get the things done. The app is starting, and when I do a reload for this app, let me show you, you will be getting some output just like this, I guess. Yeah, everything is fine, and here is your output. So this is our main menu item list where you need to first of all log in and then you can place an order, or if I want, like if I go to the admin page, then I could manage all the orders which I need. So let us try to build those things as well. So for now we were in app.txt file, and now I want another route where I can write route with the path of, let's say, admin. Okay, so now our path is admin, and here we want to add the element as admin. Okay, and if we have a admin, let's see what kind of components we have in admin. We are now going to make one admin.tsx file, not tsc, but it should be tsx file. It's here, and now we'll continue with importing the React. Import React from React, and then const admin page, so that we can perform various activities like adding a dish or deleting a dish or editing a dish. So admin comes from react.fc, which is react.functional component, and now we don't know what props we are using. So let us just try to return some fragments. React.fragment, and then just try to export this as a default route admin. Okay, so now we can use this in our app. Just we need to quick fix and import from components, and I think now everything is working absolutely fine. So first of all, in our admin also we need few things. In our admin page we would require our navigation. So I'm using this navigation, and we'll be using is logged in is equal to props dot is logged in. Okay, बिकॉज नेविगेशन में हमको is logged in चाहिए, जिसकी वजह से मैं एडमिन वाली चीज देख सकता हूँ. तो इफ आई गो टू /admin नाउ, आई शुड सी द सेम थिंग विद दिस प्लेटफॉर्म. ओके, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, जिससे कि आई कैन सी द एडमिन थिंग. तो कुछ जब हम ट्रू करेंगे तो हमको कुछ इस तरीका चीजें मिलेगा, मैनेज ऑर्डर्स एंड लॉग आउट. ओके, बट अब यहाँ पे हमको ये भी बताना है कि ये एडमिन का ही है क्या. सो अब उसके लिए हम अपने नेविगेशन जो कंपोनेंट हमने बनाया था उसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू सम मोर फिक्सिंग्स टू इट. अब हम यहाँ पे करेंगे इफ props डॉट इज लॉग्ड इन एंड props डॉट यूजर इज इक्वल टू कस्टमर. ओके, सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक चीज करने वाला हूँ. अब मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरे कंपोनेंट्स डिफाइन हो रहे हैं, ओके, इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ विच इज नोन एज, लेट्स से, app types.ts. ओके,
ऐप टाइप्स डॉट सी एस एंड मैं यहाँ पे अब टाइपस्क्रिप्ट में अपनी टाइप्स लिखने वाला हूँ। तो मैं लिखता हूँ टाइप, ओके, टाइप यूजर इज इक्वल टू, यूजर दो टाइप का हो सकता है, एक कस्टमर कस्टमर और एक वो हो सकता है एडमिन। तो यहाँ पे मैंने एक टाइप बनाई है, ओके, तो दिस इज टाइप यूजर और आई थिंक ओके गॉट इट, क्या बोल रहे हैं, आई गॉट दैट थिंग, जस्ट वेट टू कीप दिस मोर सिंपल। मैं फिलहाल टाइप सेम बना देता हूँ। तो टाइप यूजर इज इक्वल टू, यूजर दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है हमारा एडमिन और एक हो सकता है हमारा कस्टमर, ओके। तो अब मैं यहाँ पे ये टाइप लगा दूंगा इधर एंड इसको मैं कैप में लिख रहा हूँ, यूएसईआर यूजर। तो यूजर हमारे दो टाइप्स के हम इसमें देख पा रहे हैं, विच इज लॉग्ड इन एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे हमारा यूजर टाइप इज होने वाला है ऑफ टाइप यूजर। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि अगर मेरा जो लेट्स से यूजर है वो कस्टमर है तो उसको इनमें से दिखाओ, ओके। तो मैं बोलता हूँ प्रॉम्प्ट डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ये, तो ये दिखेगा। अदरवाइज अदरवाइज मेरा जो टॉप नैव है वो एडमिन के लिए कैसे दिखने वाला है वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, लेट मी राइट एडमिन लाइक दिस एंड अब एडमिन का मैंने एक अप्रैल लिखा है, लेट मी जस्ट पुट दिस टाइप एज स्मॉल एंड यहाँ पे अब मैं एडमिन में थोड़ी सी चीजें मिसमैच कर सकता हूँ। लेट्स से इज लॉग्ड इन एंड वो एक एडमिन है फिलहाल। on this admin page I will assign the user as admin। मैंने यूजर की वैल्यू यहाँ पे एडमिन दी है एंड वाइल आई एम अ नॉर्मल यूजर, उसमें मैं डैशबोर्ड में व्हेन आई क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड थिंग तो यहाँ पे मैं नेविगेशन यूज कर रहा हूँ एंड हियर आई कैन असाइन इट एज यूजर इज इक्वल टू कस्टमर। तो आई थिंक ये वाली चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। लेट मी सेव एवरीथिंग, लेट मी डू अ सेव ऑल एंड मैं अगर यहाँ पे वापिस आके अपने पेज पे ऐसा चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा इस टाइप से है, ओके। एंड जब मैं अपना एडमिन में करूँगा तो मुझे एडमिन में करना करना है मैनेज डिशेस। मैं डिशेस को मैनेज कर सकता हूँ, मैं लॉग आउट कर सकता हूँ एंड मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, मैनेज डिशेस एंड ऑल्सो मैनेज, मैं बोलता हूँ मैनेज कस्टमर्स, ओके। तो मैं अगर इसको सेव करता हूँ एंड मैं अभी एडमिन में हूँ, मैं अभी यहाँ पे जाके अगर स्लैश करके एडमिन पे विजिट करना चाहूँ तो ये मेरा विजिट आ गया एंड अगर मैं अभी अपने एडमिन पैनल पे यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन करूँ टू ट्रू तो अभी हम देखते हैं कि हमारा एडमिन का, हाँ, जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे दिख रहा है। आई कैन डू अ मैनेज डिश, आई कैन डू मैनेज कस्टमर्स और आई कैन जस्ट लॉग आउट फ्रॉम दिस एंड मेरा वापस से चीजें सब सेटल हो जाएंगी। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो मुझे इस टाइप का कुछ पैनल दिखने वाला है एंड अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ अभी तो मुझे यहाँ पे पैनल बिल्कुल ब्लैंक जैसा होना चाहिए वैसे ही दिखेगा। तो ये दो चीजें तो मेरे पास में अभी अवेलेबल है, दो राउट्स। अब मुझे क्या करना है, चलिए अभी हम सबसे पहले एडमिन का जो पेज है वो भी डिजाइन कर लेते हैं कि अगर एडमिन अगर लॉग्ड इन में है तो लॉग्ड इन में वो किस तरीके से क्या दिखाना है एंड देन क्या कंटेंट आपको दिखाना है। तो अभी यहाँ पे जो ये मेरा ऑथेंटिकेशन पेज है, अब मैं ऑथेंटिकेशन पेज में दो चीजें प्लेस करने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मेरा होगा एडमिन लॉगिन डॉट टी एस एक्स। तो अब मैं एडमिन को अभी लॉगिन करवाने के लिए यहाँ पे प्रोसेस लिखने वाला हूँ। सो आई विल डू import react from react, then I need const admin login which is react.fc is equal to props एंड मेरे props में से मैं यहाँ से रिटर्न करवाने वाला हूँ react dot fragments एंड अगेन यहाँ पे मैं अभी मेरे को props मेरे एक्चुअल में नहीं पता किस टाइप के मेरे props दिखने वाले,
तो मैं यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ, लाइक दिस, DEFAULT डिफॉल्ट, एंड मैं यहाँ से एडमिन लॉगिन को अपना एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, विच इज क्वाइट सिंपल। अब एडमिन लॉगिन मैं एडमिन में ही यूज करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे ही मुझे वो पेज दिखाना है। तो मैं अभी लिखता हूँ, अगर मेरा props डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू नहीं है, ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो मीन्स एंड, मैं यहाँ पे ये चीज को दिखाने वाला हूँ। एंड अब इसको भी मैं यहाँ से क्विकली इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे सारी चीजें सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास हम एडमिन पेज है, एडमिन पेज में when we are on admin it should be admin panel, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे इसके अंदर अपना लॉगिन फॉर्म बना सकता हूँ, ओके। आई कैन मेक माई लॉगिन फॉर्म इनटू दिस। तो यहाँ पे मैं एक div बना रहा हूँ, मेकिंग वन div, एंड ये div को मैं क्लास नेम दे रहा हूँ, और क्लास नेम में आई कैन असाइन एडमिन लॉगिन कार्ड, ओके। ये मेरा क्लास नेम है, और मैं इसको ऐसे देता हूँ, एडमिन लॉगिन कार्ड, एंड इसको मैं दे रहा हूँ टाइल्स डॉट, ओके। तो कुछ इस टाइप की मैं इसमें चीजें असाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये स्टाइल्स भी ले आते हैं हम, नो वरीज, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम एडमिन लॉगिन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS फाइल। तो इसके अंदर वो भी बना लेता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। तो इट विल बी admin login dot module dot css file, एंड वहाँ पे अभी हमने अपना क्लास नेम बनाया है, that I can again make it over here, give it a cool background of bluish color. So let's do that thing as well. We know हमने वो कलर navigation panels में यूज किया है, so we can again borrow that color from here. This was the color, okay. तो हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं like this, and definitely I should save all. एंड नाउ वन मोर थिंग, हमने अपने जो फूड आइटम्स का कार्ड बनाया है, एंड इन दैट कार्ड वी हैव सम बॉक्स शेडो, स्पेसिफिक बॉक्स शेडो। आई एम कॉपिंग दैट थिंग, एंड मैं उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। आई हिट सेव, एंड उसके बाद में मैं कुछ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दूंगा, एंड दैट विल बी आई थिंक 12 पिक्सल्स वुड बी एब्सोल्युटली फाइन, एंड I will then try to give it a display of flex. I will give it a flex direction of a row. I will then give it a justify contents center, and I will try to align my items towards center. Let's hit save. And अब इसके अंदर, इस div के अंदर मैं अपना form बना सकता हूँ। So if I do two divs, okay, the one div and it will carry the class of let's say styles dot input, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट हो गया, एंड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अपना इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जस्ट फिलहाल यहाँ पे इतना, एंड इसको वापस से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, लेट्स कॉपी दिस, एंड यहाँ पे वापस से इनपुट है, एंड इसको मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। एज आई हिट सेव, ओके। एंड अब जो ये एडमिन लॉगिन है, डू वी हैव दैट हियर, the authenticate, let me just put my admin page, admin login, ये हो गया। If props dot is logged in, not logged in, otherwise display blank.
what is the value of this going on? Let me just check. Let's go to the dashboard. Here we have is logged in false. Passing this thing inside this. Here we get your things available. And then here is the navigation panel. Then here we have the food items. Here we have the dashboard. We are getting the logged in thing in the dashboard. Then here we have our admin panel over here. And in this admin panel, we don't have props, definitely. So we need that property. And अब मैं क्या कर रहा हूँ? I am just moving this string more up and trying to implement this over here. Okay. अब मैं लिफ्टिंग द स्टेट अप कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ. उसमें मैं टॉप ऑफ द कंपोनेंट में उसके स्टेट लेके जा रहा हूँ. एंड फ्रॉम हियर नाउ आई कैन यूज कॉन्स्ट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फिलहाल फॉल्स कर रहा हूँ फिलहाल के लिए. एंड अब मैं सबको असाइन कर सकता हूँ इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू, हम बाद में आएंगे कि इसको हम और कैसे रोबस्ट बना सकते हैं, बट फॉर नाउ I think this will be really cool. सेव करता हूँ इसको, जितने भी मेरी चीज़ है सबको सेव किया मैंने. एंड अब अगर मैं अब अपने पैनल में जाता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ कि मैं अगर props डॉट इज लॉग्ड इन, ओके आई एम असाइनिंग हियर. तो ये मेरा एडमिन पैनल है जो मेरा एडमिन में दिख रहा है. फ्रॉम हियर एडमिन मैंने इज लॉग्ड इन पास किया है विच इज फॉर नाउ फॉल्स. अगर मैंने ये इसमें डाला है तो मैं एडमिन में जाता हूँ. एडमिन में आई हैव प्रॉप्स एंड प्रॉप्स डॉट इज लॉग्ड इन यहाँ पे हो गया. एंड प्रॉप्स अगर मैं प्रॉप्स डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो एडमिन लॉगिन आना चाहिए. एंड एडमिन लॉगिन मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ. तो व्हाई दिस थिंग इज नॉट वर्किंग, लेट मी जस्ट चेक. लेट मी प्लेस वन h1. हेलो. Okay, so let me just check this. Okay, we have this. Let me try to put over here. Hello. Okay, okay, got it. I was doing it a bit wrong. तो यहाँ पे मेरा एडमिन लॉगिन आ गया एंड उसके अंदर अगेन अब मैं यहाँ पे मेरा एडमिन लॉगिन शो कर सकता हूँ लाइक दिस. और जो अब एडमिन लॉगिन वाला पैनल है उसमें हमको मेन चीजें करनी है परफॉर्म. This is the admin login. This is here. Then we have two divs in that thing. Let me just go to the first page and this is this. Okay, and one more thing. Here is the customer thing. Then we get this. And then we have this. Okay. We are over here. यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड में जब हम जाते हैं तो हमारा प्रॉप्स यहाँ पे है. नेविगेशन में हम इस लॉगिन भेजते हैं, यहाँ से हमने भेजा कस्टमर. अब जैसे हम नेविगेशन में जाके यहाँ पे जाते हैं
इज लॉग्ड इन हमको यहाँ मिला, तो हम चेक करते हैं कि अगर वो इज लॉग्ड इन है एंड props डॉट यूजर इज इक्वल टू कस्टमर, तो ये चीज़ हो। और मैं इसके लिए एक फंक्शन भी बना सकता हूँ इन माय दिस सेक्शन। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फंक्शन डिस्प्ले nav बार, इसके अंदर आई नीड सम थिंग्स। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे यहाँ पे यूजर कैटेगरी चाहिए एंड यूजर विल बी ऑफ टाइप यूजर user। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि अगर इफ यूजर इज इक्वल टू कस्टमर, ओके, कस्टमर एंड props डॉट इज लॉग्ड इन, मतलब वो लॉग्ड इन है, तो मैं रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा मैं? ये वाला अपना पार्ट पूरा मैं ये रिटर्न करूँगा। एल्स, और इसको एक और चीज़ से बना सकते हो आप, ये जो लॉग्ड इन है, लॉग्ड इन, इसकी कंडीशन ला सकते हो यहाँ पे। दिस विल बी मोर परफेक्ट कि अगर वो लॉग्ड इन है तो हमको ये रिटर्न करना है, अदरवाइज हमको ये जो ड्रॉबैक वाला है ये रिटर्न करना है, समथिंग लाइक दिस, ओके। एल्स इफ अगर मेरा यूजर इज इक्वल टू एडमिन है, मैं रिटर्न करना चाहूँगा क्या? तो मैं रिटर्न करना चाहूँगा ये वाला सेक्शन। अगर props डॉट इज लॉग्ड इन है तो मैं ये सेक्शन रिटर्न करूँगा, अदरवाइज मैं ये सेक्शन रिटर्न करूँगा, दिस वन, ओके। ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी। और अब मैं यहाँ पूरे इसमें ये पूरा यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा एंड मैं इसमें props डॉट यूजर असाइन कर दूंगा लाइक दिस। एंड अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखो ये करेक्ट चल रहा है। एंड अगर मैं एडमिन पे जाता हूँ तो एडमिन पैनल है, प्लेन पे जाता हूँ तो ये वापस लॉगिन है। तो इस तरीके से मेरा ये चीज़ तो करेक्ट चल रही है भाई, जिस तरीके से चलनी चाहिए मेरी वैसे ही चल रही है, इसलिए मुझे इसमें अब परफेक्ट आउटपुट्स मिल रहे हैं, ओके। अब रही बात हम जब यहाँ पे गए इन एडमिन, तो एडमिन पे जाने के बाद यहाँ पे अभी एडमिन लॉगिन भी मुझे एक्सेस करना है, ओके। तो उसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे इस एडमिन पैनल को यहाँ पे रेंटर करना चाहता हूँ एंड वो मेरा यहाँ से एक इनपुट फील्ड रिटर्न हो रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू सी दैट थिंग, ओके। तो मैं एडमिन लॉगिन कार्ड में जाता हूँ, लेट मी जस्ट गो इनटू दिस, और ये जो मेरा एडमिन लॉगिन कार्ड है तो मैं मार्जिन टॉप से 120 पिक्सल्स लूंगा। ये भी हमारी जो फील्ड्स आ गई हमारे पास में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे इसको एक लेट मी जस्ट डू इट लाइक दिस, या अब ये जो एडमिन लॉगिन कार्ड है
इसको मैं div क्लास नेम ऐसे, एंड यहाँ पे ले रहा हूँ styles डॉट centered container. ओके, एंड अब ये सेंटर्ड कंटेनर की मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देता हूँ. I do a display flex, display flex direction row. Okay, justify content center, align item center. Just save this thing. एंड यहाँ पे अब जिस तरीके से होना चाहिए वो मुझे मिला. अब मैं अपने कार्ड को देता हूँ विड्थ ऑफ 100%. 100% पे वो फैल गया, बट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 400%. दैट इज वेरी मच. हाइट देता हूँ मैं इसको यहाँ पे ऑटो. हाइट देता हूँ मैं यहाँ पे ऑटो. जैसे मैंने ये करा ये हो गया. अब इसके अंदर की जो कंटेंट है उसको मैं पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल्स, और लेट्स से 15 पिक्सल्स की पैडिंग. ओके, अब ये सब चीजें तो हो गई. नाउ वी वांट कि इस फॉर्म में थोड़ी सी स्पेसिंग भी हो, तो मैं इनपुट फील्ड को भी यहाँ पे डिजाइन कर दूंगा थोड़ा. तो मैं बोलता हूँ मेरा इनपुट जो है उसको बॉर्डर रेडियस में दूंगा 12 पिक्सल्स. ओके, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट. उसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 18 पिक्सल्स. उसको जो बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल्स सॉलिड वाइट देंगे. और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो कुछ इस तरीके का ये आउटपुट आ गया. बैकग्राउंड भी इसका होगा ट्रांसपेरेंट. एंड बैकग्राउंड भी मैं इसको दे रहा हूँ वैसे, पर मैं इसको लेट्स डू वन मोर थिंग. स्टाइल्स. ओके, हमने गलत जगह पे ये स्टाइल्स दे दिया. div है. ओके, तो दिस विल बी div डॉट इनपुट, जिसके अंदर है हमारा इनपुट. ओके, तो मैं बोलता हूँ कि ये तो ऐसा ही रहे. ये वाली जो क्लासेस यहाँ पे लगी है ये क्लास जाएगी हमारे इनपुट्स को. तो दिस क्लास विल गो इन आवर इनपुट. जस्ट सेव दिस, एंड ये आपको यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है. एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम लगा सकते हैं डॉट इनपुट. एंड इनपुट को जो मैं दे रहा था वही सब, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 10 पिक्सल्स. देन बैकग्राउंड color will be transparent. Adding to this will be 10 pixels. Font size will be 20 pixels. Let's save. यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिल जाएगा. फॉन्ट साइज 15 पिक्सल भी कर सकता हूँ मैं. ओके, एंड then we have border 1 pixel solid white.
not here. It will be here. Okay. Here. Okay. And then to this element, जहाँ पे हमारे ये दोनों चीजों को हम स्टाइल्स कर रहे हैं, which is which resides inside this admin login card. वहाँ पे मैं let's see one more thing. Okay, हमारे admin login card के अंदर ये elements है, उसको मैं उनके elements में यहाँ पे gap देना चाहूँगा, which will be 15 pixels. Okay, and then we have color will be white. Whatever you will write, this will be in white. Then we can do something known as placeholder. Enter username. You can enter the username, or you can also do another thing. Okay, and now we'll also give it a color known as placeholder, where I will write it as enter password. And now we want to also change the color for placeholders, so we will give two things and then placeholder, and here we can give the color for the placeholder, where I will type color will also be of kind of wheat. So I think this both the things are now done. Now we can also give it a heading which says in, let's say, in H3 admin, and it should be here. Okay, so admin sign in, and the class name to this will be styles dot admin login title. And here again we will go over here and now try to give this some more things. Let's say the color will be white, and the font family will be the same as we have in another things. So let's copy this from here and try to paste that thing here. Font size will be 20 pixels. Let's save this thing. Admin sign in, and then I think we can do this to this much. Okay, fine. And then, yeah, okay. Small things will your credentials like this. Okay, and another thing is like you can just decrease the size what is available. Let's say the margin rate. It will be margin bottom minus 10 pixels. So let's see. Yeah, okay. Let's do minus 5 pixels.
Let's say margin bottom will be 10 pixels. Okay. And now give it a cool button. And in the UI section, we add this button. So you can use this button thing in your login form. So here you can also have this button. And now this button will come from UI button. Hit save. And now this button requires a color, which is obviously a white one. So let me go to the button category. And then you can give it a border color scheme. Okay, it's a color scheme. Okay, we have a color. This will be a color. And then you can also set okay, so border is this, background is background. You can ask the BG color, I think. Color and BG color, which is always a string for this now. Okay. And this can be a optional property. So BG color I'm defining just over here. Like this. This will be props.bg color. And here where I'm using that button, I can give it a BG color, which is current. Current. Let's save all this. Give it a reload. Okay, and one more thing, background color is this transparent heading border. With this, then we have border radius. We have the color and this thing. Okay, let me just try to give it as red. Okay, if I don't have any colors over here, okay, now it's fine. And here I want to type transparent. Okay, now it's fine. And the title to this will be, we want a label for this. Okay, so the label will be, let's give it a label as well. Label of type string.
So giving it a label. Label. Let's save this. Okay. And over here, let's give it a label. And the label will be login. Okay. Or verify and login. So I think these things are there. Now we have a input form, we have a password form, and now on clicking on this, we can simply verify this. Okay, so this is our admin form. And once the admin form is there, then we could just verify the dishes. Also, along with this thing, I want to just set up one Node.js server as well. So here we can give it a name as server, and just go to your list, go to server and do a npm i-y. This will initialize a package.json file for you. Not this, I want just one thing. Yeah, okay. Inside this server, just do one thing, which is npm init-y. This will create a package.json file for you. And here now you need to npm install express. Just install express. Okay. Once you have the express, npm install nodemon. We are installing a live server to which we could just get our backend ready. So we have this, and inside this server, you need to now write server.js like this. I hope you are clear with what all we are performing. We installed a server.js file. Okay, we installed the Express framework for making our backend. And also we installed nodemon for having that live reload functionality. Okay. Now once this is done in your server.js, just use const express is equal to require express. Then we need const some codes so that we can have that cross network origin thing. So, and also we don't want any errors. So we will do one more thing, npm install course. Install this thing as well. You will get that thing installed. Then we need http, which is require http. Just install that thing as well. npm install http. Install that thing as well. And now we can use const port is equal to process dot env dot port like this. Okay. And now we can do const app is equal to call this express which we have called just now like this. And then we can have const create http context just to create a context, because whatever headers we will receive from let's say React side, that we can catch it over here. So I'm trying to get all the headers which are available and just going to receive those headers from the request. Okay. And now the app which you made, just use const app, not const, sorry. It will be app dot use the course which you have just installed. Okay. And then app dot use. And inside this use, you want some basic stuff. Let's say we have
food server, something like this. And yeah, I think now we are done. Also, you need one more thing. You need to set the port. I'm setting this port to 8000, or the port whichever port is available, I will assign that port over here. And then finally, I need app dot create me the server from our app, like this. And then I want from our app, and then I want to listen, LISTEN, listen on app.get port which I defined over here, and on localhost 127.0.0.1, like this. Okay, so I think now this is fine for you guys. And for now, just forget about this context. Let's keep it very simple. And yeah, this will be http.create server. Okay, so this is a basic server. And remember, we installed NodeMon. So here in the scripts, you need to write one more thing, server. Okay, and then NodeMon server.js file. So now we can also start a server. So in order to start a server, you need to now use npm server, npm run server. So now you see we have a server, and when we go to 127.0.0.1, let us just try to go to that thing as well. HTTP 127.0.0.1 colon 8000. We get this thing, cannot get this, and this can be easily done using, let me do one thing, app.use foods, yeah, wait, food items, and then here we get our request response next, and here I can do response dot send hello, just a simple thing. And if I do now food items, I get hello. You can see this. Okay, so our server is up, and now you can send anything which you want, like const items 12314, and just use response send items. Got this thing? So anything whichever you think you want, that you can send. And in the app we have those dishes, okay, on our dashboard. Now we'll try to send our dishes using that server, Node.js server. It's a Node.js server, and there I will try to send this thing using my server. These are my things, and whenever I do a reload, you see we get our items. So whenever we are hitting something, and also just install this Postman. I have this Postman, and now inside this I will show you one thing. If I send my request to this thing, to
to my server where we have this path, then see what will happen. Just going over here, making a request, a basic request, just close everything, just try to close everything, pick a new thing, it will be HTTP 127.0.0.1 to 8000, and I want at the food item, and when I do send request, I get all the data which I need. Okay, so this is my data. So now you can see one thing. We have our entire food items over here now. Food items. We have this food items, and now we want to send this food item using, let's say, to our dashboard. Okay, so how we can send this? First of all, I am just trying to remove these items. Okay, and once I have removed all of these items, now I can just try to in my normal site, just try to go to the main page. Okay, and now these items will come from backend server which we settled up just now. Now in dashboard, okay, in our dashboard, we want to receive those things. So here now I'm going to use props.food items, and now food items will be gathered from our app.tsx file. So how we are going to get that thing? So here now I'm going to use some special hooks which is use state, and for now it is blank, and here I'm going to do food items like this. So food items, set food items like this. Okay, and wrap this thing in an arrow. Now food items I can send from here. So these are food items like this. Inside the dashboard we have the food items. This is food items. And now how can we send it? Just let's see. Use from React use state. We need to set the food item. So we'll use effect to handle each and every side effect. We use spec hook. So here we are using this use effect, and now use effect takes something like this and some dependencies, and now here I can do food items and just now try to fetch to our http 27.0.0.1 slash 8000 slash food items like this, and this is a promise, so we'll receive the items over here, and then we'll try to set food items using those items, whatever items we have. So now this will be any. Let me just try to save everything, and whenever we do an inspect on this, okay. And one more thing, we have here food items. Okay, we go to our dashboard. We have this props.food items, and just do this question mark over here. And also you need some key to be there. So yeah, we need some key. The key is equals to, or you are passing those items, and inside those items now I can do key is equals item dot id.
props.item.id, props.item.id. Let me just save that thing, do a proper reload, and still we have some errors. Let me just try to see my request. एंड क्या यहाँ पे हमारी अभी तक रिक्वेस्ट गई है? लेट अस चेक दैट. यहाँ पे आके फेच एक्सएसआर में जाओ एंड रिस्पॉन्स में तुमको पूरा प्रीव्यू मिल रहा है, जो हमारे आइटम्स है वो आ रहे हैं हमारे पास में. एंड एज मेनी टाइम्स यू डू अ रीलोड यू गेट दोज थिंग. ओके, तो let me just again go to this tab.tsx. Okay, here we are setting this food items. We have this food items. Okay, food item for map is not function. Okay, let me just check this. So here we have this food items. तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ. ये जो मेरा food items है, okay, these are of type dish. These are of type dish का array. अच्छा, इसमें सेम चलेगा. Okay, as dish का array. Okay. What is the wrong in this? Is not a function. Okay, one more thing. And okay, हम डैशबोर्ड पे यहाँ पे इसको रेंडर कर रहे हैं. We are getting some props using this thing. And अब यहाँ पे we have this food items जहाँ पे हमने इसका ऐसा सेट किया है. And यहाँ पे मैं अब कर सकता हूँ if food items dot length is greater than 0, तो ये तो food items. अदरवाइज एक आइटम मैं खुद बना रहा हूँ, id is 0, and then we have एक बार डिशेस का देखो नेम प्राइस स्टेटस. Then we have name and a price 0 status. Status old. Just उसको सेव करते हैं. Each key in a list should have a unique prop. Dashboards. We are setting that thing. If we go to the dashboard, यहाँ पे हमको अपना की मिल रहा है. We are passing the item inside this, and then we are providing the key as props. Okay. भी हम इसको भेज रहे हैं. Everything is there. Try to do one more thing. हमारा ऐप में we are using this thing.
तो हमने यहाँ पर अपना API लिखा है and we are just trying to complicated. And now we get this response. Okay, that is the response, not JSON. एंड प्रॉपर वे इसका करने का थोड़ा सा और मैं इसको इम्प्रूव करूंगा. यहाँ पर हमारे पास ये ऑलरेडी है ना, लाइक दिस वी हैव अ रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे करूंगा इसको यूज इफेक्ट के अंदर ही const fetch data is equal to this. Okay, I'm using this async just like this, and I'm going to use this inside this just like this. Const response is equal to this. Okay, and अब मैं करूँगा const data is equal to, I want to await for response.json. Let's do await over here as well. And then finally, this is the function, and I wanna return this data from here. Now I want to do a set food items. Inside that, I want to just call this fetch data. And just now, oh, wait, not this, but fetch data like this. And instead of returning this, I can do set food items data. Okay, just try to save everything, and you see now each and every item is where it should be. So अब हमारे items तो आ रहे हैं, but they are totally coming from our backend. Okay, they are totally coming from backend. And also हम एक और चीज कर सकते हैं इसमें, we can do this whenever we want to, and this is the proper way how we should also do this thing. And based on our items, we are just managing to set our thing.
So now, guys, that's it for now, and we'll see in the next, जहाँ पे अब हम admin का login करके CRUD अपना बना लेंगे, and then we can continue making the ordering of food. So our server is done, our admin's URL is done, and also एक चीज और बस यहाँ पे हम सेट करके छोड़ सकते हैं. Whenever we are going to our food items, just we can add two buttons, in my opinion. And the label for this will be order now or add item, and then we can have a cool color, and the color will be obviously white, and BG color will be transparent. Okay, so we have this cool things, cool stuff. Add items, and also side by side you can have one more, or let's say we have one cool div, and in the div we have both of these buttons. Okay, let me just try to wrap this thing, paste out over here, and the other will be view view dish view dish and add item. And here for normal things we will do margin top. I think 6 pixels would absolutely be fine for now, or let's do it 8. I think now our dishes look more cool, and we have more of the things done. We can add or we can view the dish, and where you do a login. Once you log in, you can also have the card. So for now, we are leaving the state over here. I will see you in the next one. Please do subscribe my channel so that you get all the latest things related to tech, and you become a more of a good developer in yourself.